and permeability. This chapter is very important for according to gate preparation. So what is the effective stress, capillarity and permeability? We are discuss all the three topics in this lecture. So firstly we discuss the what is the effective stress. So what is the effective stress? So firstly we discuss is soil. In soil have three phase diagram, and three phase diagram there are mainly two phase in this. First is solid phase known as the mineral skeleton. These are solid particles. If we discuss only for solid particles, that is solid phase and like as skeleton. Or second is the fluid phase or pore fluid. It also contain air and water. The fluid phase we contain air and water. The constant of pore phase water influence the property of soil very much. In effective stress, capillarity, permeability, saturated soil is considered. When we discuss about the soil properties like effective stress, capillarity and permeability, then we consider most of the cases the soil is completely saturated. That means the air is replaced by the air is replaced by the air is replaced by the water. And now we discuss what is the principle of effective stress. What is the principle of effective stress? Targaji expressed the effective stress principle. The principle applied fully saturated soil. Firstly, we discuss. We assume that the soil is fully saturated. Here, this is a soil A and this is soil B. The height of the relative soils H1 and H2, and the unit weight of the respective soil is gamma 1 and gamma 2. The total stress on soil mass, a force per unit of soil mass transmitted in normal condition, that is what is the stress? Stress is force upon area. Here the force is total weight. And what is the included in that? If we discuss about the total weight, that is F, that is applied here. Second is weight of soil A. So what is the weight of soil A? A is the area, H is the height, that is volume, and volume into unit weight, that is the weight of soil A. And second, soil B. Here we are discuss at that point what is the total weight, total stresses in this soil, and weight of the soil B, that is area into height, that is volume, and volume into unit weight to soil. And this is divided by total area. So here we find the total stresses at the plane here. At the plane here, what is the total stress? Because that stress is three component. First is the applied force, second is the weight of soil A, and third one is the weight of soil B. Now what is the stress in the soil? So here total stress is effective stress plus pore water pressure. What is the effective stress? Here the effective stress equals to total stress minus pore water pressure, and the representation of that stress is total stress represented by sigma, effective stress represented by sigma var, and pore water represented by u. And what is the u? U is the pore water. It also have two components. First is hydraulic pore water pressure, and second is excessive pore water pressure. So we discuss these all two pore water pressure next slide. So what is the pore water pressure U? The pore water pressure is made of two parts here. First, the stress due to pore water known as neutral stress or pore water pressure, that is U. The pressure of water filling between the void space is known as the pore water pressure. If we have considered that this is solid and the water is inserted between the soil particles or in void spaces, that pressure, that the water act a stress or a pressure to the adjacent particles, that is pore water pressure. If piezometer inserted in a water rise of height h, then the hydrostatic pressure is h gamma w. We are already study in the FM. If a piezometer is inserted at a particular soil, the what is the pressure? The pressure is height into unit weight, or we also read that rho gh. What is the rho gh? Rho gh is the pressure at a particular point. So h is the height of a piezometer, g is the specific gravity, and rho is the density. And we also write rho g equals to unit weight, that is gamma. Okay, so here we discuss about water, then unit weight of water we can consider here, that the hydrostatic pore water pressure is h gamma w.
Second is the excessive pore water pressure. When external load is applied, the pressure of water in void suddenly increases, which is equal to the applied external force. If we applied a load on a soil, then the in the voids some water is there, and the water bear the whole forces when we applied the sudden load at the time of the at any instant time in the soil. As the time passes, excess pore water pressure dissipated in the lateral direction. After some time, the water releases the pressure to the other solid particles. After infinite time, the steady state condition reach and the excess pore water pressure is completely dissipated to the zero. When we apply the applied external force on a soil, then the whole excessive pore water pressure is generated due to the load, and that is equal to the excessive pore water pressure. Um, like passing of time, the excessive pore water pressure is converted to the all the soil pressure, and the whole water is deposited from the soil. Now we discuss what is the effective stress. The total stress and neutral axis are measured, but effect is not a physical parameter and cannot be measured. So it can be computed by effective stress equals to total stress minus pore water pressure, and effective stress is used to determine volume changes and shearing resistance. If we discuss about the volume changes and shearing resistance, what is that? A volume change if a soil have voids and solid particles also there. If voids or in voids we are assume that the soil is saturated and the water is deposited and dissipated from the soil, then the load is transferred to the solid particles. In physical meaning, factor is the sum of the contact force divided by the gross area. Because when we discuss about the total stress, then we consider the whole area of the soil. But in case of factor stress, we assume that how much soil is contact to the grain to grain. That is effective stress. Here we discuss is a particle and second is other particle. So here the transfer is load by the this action is directly contact with this. So here area is also decreases, then the effective stress also increases in that case. So for this we are discussing a small question, a simple question for that. Draw the total stress, effective stress and pore water pressures of a diagram. Here given two is soil, which is two layers. First is clay and second is sand, and the water table is just down to the 3 meter of the ground surface. The water table is down from ground surface of 3 meter. So firstly, we draw the effective stress diagram. Here the effective stress is zero because no overburden pressure is there, and the pressure is increasing to bottom side because here we know that the effective stress stress is h into gamma, height into unit weight. So whether the height is increasing or depth is increasing, the unit pressure is also increases here. So at the section 2, the what is the stress? Stress is a unit weight into height, that 17 into 3, that is 51. At point 3, what is the stress? So total stress is 17 into 3 plus 20 into 4, that is 91. At that point, at the section 4, the total stress is 17 into 3 plus 20 into 2 plus 19 into 4, that is the 167 kilonewton per meter cube. It is the total stresses. Now we consider the pore water pressure. Pore water pressure is due to the water. So if we consider the sand, then we know that the water table is below 3 meter, from the ground surface. In case so when we consider the pore water pressure, if water table is present there, if there are no water, then we consider pore water pressure is zero. That's why in first part, section 112 1 to 2, there is no pore water pressure because here no water. That's why the pore water pressure is always also zero. In section 2, here is the water table, then the water stress is also increases, and what is the pore water pressure? H dot gamma w. Here
what is the pore water pressure? This is H dot gamma W. Gamma, what is the gamma W? Gamma W is considered generally 10 kilonewton per meter square. What is the depth of the layer? The depth is 2 meter, so 10 into 2, that is 20. And here the unit weight of water is same, that's why the total height to be considered. So 2 meter plus 4 meter, that is 6 meter, and 6 multiplied by 10, that is 16 kilonewton, 60 kilonewton per meter square. Now turn to effective stress. What is the effective stress? Effective stress is the total stress minus pore water pressure. So here, what is the total stress? That is sigma, and U is the pore water pressure. So we can draw that diagram also, because here total stress, effective stress, pore water stress all are 0. So that's why that point is 0. And point 2, here point 2, the total stress is 51 and the pore water pressure is 0. That's why effective stress is also 51. At point 3, here the effective stress, total stress is 91 kilonewton and pore water pressure is 70. That is the effective stress. Effective stress is 91 minus 20, that is 71. At point 4, we saw that total stress is 165 kilonewton per meter square and pore water pressure is 60 kilonewton per meter square. That's why effective stress is total water pressure, total stress minus pore water pressure is 107 kilonewton per meter square. Now we discuss the second question. If 4 meter deep layer of sand have unit weight of 20 kilonewton per meter square is placed over the surface, and find effective vertical stresses at those in two cases. First is immediate after the fill, and second the many year after the fill. So firstly we consider we understand what is the conditions. First is immediate after the fill. That means the here excessive pore water pressure is also develop. But in case of many year after fill, we already study in last slide. Many years after fill, the soil, all water is depreciated and excessive pore water pressure must be 0. So here we discuss first in immediately cases. So point A, first here we consider the total stress. Total stress is 0 because no overburden pressure is 0 and height is also 0. So total stress is 0 and pore water pressure is also 0. In case section 1.1, the total stress is 20 into 40, that is 80, and the pore water pressure is also 0 because no water presence in this layer. That's why effective stress is also 80 minus 0, that is 80 kilonewton per meter square. Now we consider the section 2 here. Here the total stress is equals to 20 into 4 into 70 into 3, that is 51 plus 85 is 131, that is 131 is there. But here we consider that the total effective stress is also there. So what is the total effective stress here? So here the excessive pore water pressure is also there because we applied immediate the fill, that this mass above the sand layer, that sand layer is act as a overburden pressure for that soil. So here the overburden pressure is 20 into 4, that is 80. Then effective pore water pressure and the excessive pore water pressure is 80. So now the effective stress is, total stress is 131 minus that is excessive pore water pressure, that is 80. Hence the value of effective stress is 51. Now we consider that if we increase 2 meter here, that is also greater to 71. That value is considered here. And point 4, what is the effective stress? The total stress minus 107 kilonewton per meter square. This case is immediately, and after that second case we discuss after many years. That means the excessive pore water pressure is here 0. Only the hydrostatic pressure is here lies. So here first case is same. In first round, that is same. The total stress and effective stress and pore water pressure is the same value. At that point also the whole three values are same. And at that point 3, what is the total stress? Total stress is 20 into 480 and 51, that on 40. That means that is 171, but the hydrostatic pore water pressure is 2 into 20, that means 171 minus 20, that is 151.
and same case is here, and the total stress is 20 into 4 is 80, 80 plus 51 plus 40 and 90 into 4, that is the total pressure, and the pore water pressure is here 10 into 6, that is 16, and total stress S minus pore water pressure, that is 187 kilonewton meter square. So that's the method to calculate the effective stress at a particular point of any soil. Now we discuss what is the capillarity of the soil. Here we consider that this is a ground surface and this is a water table here. The water table is just on the phreatic line. We consider that the above the phreatic line and the temperature, the pressure is atmospheric pressure, and when this ground surface is there is sloped, then the water is flow in that direction and continuously seep from here, and this water is generated. The groundwater can exist in two forms. Here we discuss the groundwater can exist in two forms. First is phreatic or gravitational water, that means the water is flow under the gravity, and second is capillary water. So what is the capillary? We already study in fluid mechanics that if we insert a small diatube in a water, then we saw that some water level is rises, and due to rises some height, and due to addition of between water and the tube. Okay, so here we also discuss the capillary water. The upper surface of zone is fully saturation, that is called water table or phreatic line. The saturation zone upper layer is called water table or phreatic line. At the water table, groundwater subjected to the atmospheric pressure, so the pore water pressure is 0. So now that is the important question. What is the pore water pressure at phreatic line? So that means the pore water pressure is 0 at that particular point. Now we derive the expression for capillary rise and capillary fall. And this is a container, and we insert a small diatube in that, and we saw that the h height water is rises in the tube due to the addition between the tube and water, and also some here surface tension is also there, that for equilibrium conditions fx cos theta, here is the, if we consider that f is the force, that is surface force, and that is generated at a theta angle, so we are considered as a horizontal or vertical component in both direction, horizontal and vertical direction. The horizontal component is fs sin theta and vertical component fs cos theta. Here we are considering vertical direction. We apply a equilibrium condition. Then fs cos theta equals to the weight of the fluid column. So what is the weight of fluid column? That is weight of fluid column is density into volume into z. That means unit weight into volume. So what is the volume? Here volume is area into height, and rho g is the unit weight, that is the weight of the water column. And what is the fs cos theta? Fs cos theta is the surface tension force, and what is the fs cos theta? Here fs equals to the sigma into perimeter, that means surface tension is in newton per meter, then the total force is surface tension into perimeter and cos theta. So here we find the value of rise in that cases. And what is the specific weight? Specific weight is the rho c, and the capillary rise of a particular soil, that is 4 sigma cos wd. Here w is the specific weight, or that is unit weight for a particular soil. The capillary water is held above the water table by surface tension. We consider that also, and the capillary due to the surface tension and addition force between the water and the tube that is inserted in the water. If theta equals to 0, that means we write the surface tension is T. The capillary rise given as the, where cos theta is 0, and then cos 0 equals to 1, then H equals to 4T gamma WD. And the pressure at the water table is atmospheric pressure. Below the water table is pressure is positive, above water pressure is negative. Here we consider the water table at the
we consider the water at the water table. The at pressure is atmospheric pressure, and above the water table the pressure is positive. Sorry, above the water table the pressure is positive, and sorry, the below the water table the pressure is positive, and above the water table pressure is negative. Hence pressure is in capillary saturation zone, pressure is negative. The pressure variation linear from the water table up to capillary saturation zone. So here is the capillary saturation zone we discussed here. This is the rise of the water in that case, particular case. So what is the effective stress here? The effective stress is total stress minus the pore water pressure. But in case the pore water is negative, then so total stress minus pore water pressure. That means the effective stress increases due to the capillary rise in soil. That is the important question here. The effect of capillary in the effective stress. Here we know that the effective stress is increasing, but due to the capillary rise in the soil. In capillary saturation zone, unsupported excavation can be done in almost capillary saturation zone. Height of difficult to calculate because voids are irregular. Hence, we use empirical formula to calculate the height of capillary rise. So here we calculate the height of capillary rise because here the saturation zone and difficult to the calculate the voids. So here the capillary rise is h bar equals to c upon e d10. So what is the c? C is the empirical constant. That value is lies between 0.1 to 0.5 centimeter square, and e is the void ratio and d10 is the size of the particular soil. For that we consider the capillary. Now the question, very important question, if you solve that question, so this is the total complete package of effective stresses. Okay, so this what is the question? A layer of saturated clay 4 meter thick, 4 meter thick, that is clay, sorry, layer of saturated clay 4 meter thick, and the water table is below 4 meter, and 1 meter is capillary rise is there below the ground. Water table is 3 meter below the ground level, and saturated unit weight of the soil is 19 kN per meter square and 20 kN per meter square respectively. The unit weight above the water table is 17 kN per meter if the height of capillary saturation zone is 1 meter above the water table. Plot the effective stress diagram. So firstly we plot the pore water pressure diagram is here. So here the soil is dry, then the pore water pressure is 0. Here this is the capillary zone. So we already studied that the capillary, due to the capillary rise, the pore water pressure is negative. Then in this layer the pore water pressure is negative. The maximum value, the value is varies from water table to above direction. That means the pore water is 0 at the water table and increasing at the height of particular soil in the capillary zone. So here the capillary pore water pressure is this is the height, this height is 1 meter and the unit weight of water is 10. That means the pore water is minus 10 kilonewton per meter square, and at the water table the pore water pressure is 0, and this case is simply assumed that in and previous cases like this. Here the pore water pressure is this, and this thickness is also 2 meter. That means this value is 2 into 10 is 20, and this is 60. This is the effective stress. And what is sorry, this is the pore water pressure, and what is the effective stress? Here total stress is 0, and here total stress is 34. And after that we consider that 10 kilonewton per meter square is negative pore water pressure. That means effective stress is equals to total stress minus pore water pressure. But in case here the pore water pressure is negative, that means the effective stress is total stress plus pore water pressure. That means that value is increasing by 10 kilonewton meter square. After that the pore water is decreasing, and that particular case the value is 54. So here this is the calculation of different zone 1 2 3 4 5 6. Okay, so you can take a screenshot and solve it in by your hand.
for because of better understanding. Okay, now we discuss the effect of seepage on effect. Now we discuss the effect of seepage on effective stress. First condition is no seepage condition. First condition is no seepage condition. So if we discuss here, the stress is transfer. The stress is transfer by physical contact of one particle to other particle. In case of when the particles are move in opposite direction and come to nearer to each other. And second is when the particles are go from one to another side. This is no seepage condition. If second condition is downward seepage. If here is the downward seepage, that means the effective stress increases in that case, because this flowing water is also uh, this effective stress is because the downward seepage is increased as a drag force on that particles. That's why the effective stress is increasing. But in case of upward seepage, the soil particles are go away from one another, and then effective stress is decreasing particular that case. So what is the head causing flow in particular case? If we consider as a dam, this is a upstream side, that is a downstream side. Here the water level of upstream side is H1 and downstream side is S2. So head causing between A and B, what? Because the flow is done due to the head difference is available with the particular 2 points. The head causing flow between A and B, that is X plus H1 minus K H2. Here X is the length of resisting media. Okay. Now what is the hydraulic gradient? So what is the hydraulic gradient? Hydraulic gradient is a del H upon length. So what is the head difference between in these two cases? That is X plus H1, that is the first, and second is H2 upon the length of the resisting media. So here is the hydraulic gradient. Head loss occurs only in resisting media. Here the soil is resisting media. So the here we a special condition is also generated here, that is quicksand condition. So what is the quicksand condition? If the effective stress of a particular soil equals to 0, that particular condition is known as the quicksand condition. So what is the effective stress that case? The effective stress is seepage force plus buoyant force upon my area. What is the total what is the effective stress? Effective stress seepage force plus buoyant force upon my area, that is effective stress. In case of upward flow, seepage flow is negative and the buoyant weight is positive. If sigma was 0, then shear strength of the soil. So what is the shear strength? C plus sigma tan phi. Here the sigma, the effective stress is 0, that means shear stress equals to the cohesion T equals to C. For cohesionless soil, if we consider the soil is cohesionless or sand, in for cohesionless soil the cohesion force is also 0, that means the shear stress equals to 0. So that happens in only on cohesionless soil. The quicksand condition is a special type of condition when the effective stress is 0 for a particular sandy. So this is the favorable condition of a quicksand condition. Quicksand is favorable condition. The effective stress 0. The effective stress 0 means the contact force between the soil grains is 0, and the soil particles are behave like just like a loss of gravitational force. This condition is called quicksand condition. We can avoid this quicksand condition by lowering the water table. If anywhere the quicksand condition is generated, so what is the solution at that particular point? The lowering the water table, increase the depth of sand, and adding some charge on the downstream end. Because of this, the effective stress is generated at that particular soil. So what is the solution for quicksand condition? Lowering the water table, increase the depth of sand, and adding the surcharge on the downstream side. And how can you calculate the critical hydraulic gradient? So what is the critical hydraulic gradient? That is the if a soil is condition of submerged condition, so critical hydraulic gradient is the ratio of submerged to the unit weight of water. So what is the submerged unit weight? Submerged density is saturated minus gamma w. That means the G plus I is 1. Then how to we calculate the
critical gradient with the formula of g minus 1 upon 1 plus c. What is the g? G is the specific gravity of solid particles and E is the void ratio. So you can find the value here, critical gradient. Now next topic is permeability. So what is the permeability? Permeability is a property of soil described quantitatively. The ease with which water flow through the connected voids of the soil sample is called permeability. That means if a soil does not oppose to flow of water, or water can flow with ease in from a particular soil from the voids. That means if the soil voids are interconnected to each other, that soil have more permeability. इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो भी सॉइल है उसके अंतर्गत यदि वॉइड्स क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो परमेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी और पानी के फ्लो को यदि सॉइल पार्टिकल रजिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या होती है, उसकी परमेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि परमेबिलिटी के बारे में। परमेबिलिटी एक वन डायमेंशनल फ्लो है, ठीक है, जिसका अपन डिस्चार्ज अपन डार्सी लॉ से मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डार्सी लॉ? डार्सी लॉ इज Q proportional to A, where Q is proportional to A is the cross sectional area and Q is the discharge, and Q is also proportional to H, head causing flow, कि किस हेड की वजह से अपना फ्लो हो रहा है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर वाटर होता है तो उसका फ्लो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हेड के भी प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ द रेजिस्टिंग सॉइल। इफ सॉइल की रेजिस्टिंग लेंथ ज्यादा है, ठीक है, यदि वाटर को फ्लो करने के लिए पाथ लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है तो उस केस में उसका डिस्चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हेड अपॉन जो लेंथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। दैट मींस आई। तो आई क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड व्हाट इज द डार्सी लॉ? द डार्सी लॉ इज क्यू प्रोपोर्शनल टू आई ए। और डायरेक्टली if we discuss about the Darcy law, basically the Darcy law is B proportional to I, actually B proportional to I. Here V is the velocity and I is the hydraulic gradient. If we are replace the proportionality sign, so here a coefficient will come here. That means V is equals to Ki and Q equals to KIA, because Q is equals to वेलोसिटी इंटू एरिया। क्या रिसर्च क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज के, और के क्या कहलाता है, अपनी परमेबिलिटी कोफिशिएंट कहलाता है कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए। यदि अपन को परमेबिलिटी निकालनी तो अपन क्या करेंगे, V बराबर KIA। ठीक है, तो यही अपना डार्सी का लॉ है, इसने अपन मेंशन किया हुआ है पहले से। तो नाउ वी डिस्कस द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के अंदर देखो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी तो क्या हुई, जहां से सॉइल को पाथ मिल गया एक तरह से, यानी कि अपन एरिया को कंसीडर कर रहे हैं किसको, ओनली वॉइड्स को, तो वो अपनी क्या कहलाती है, एक्चुअल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ पर्टिकुलर वॉइड्स। तो हियर क्यू अपॉन में ए, तो ए से यदि अपन मल्टीप्लाई किया, गुणा किया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, अपर एंड लोअर साइड, तो व्हाट इज द वी ए, वी ए इक्वल्स टू वी ए एंड एल से मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इसको अपन एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम की टर्म में, और वॉल्यूम की टर्म में यदि अपन कंसीडर कर लेते हैं तो एक्चुअल जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सीपेज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। ठीक है, तो जब भी अपन एक्चुअल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन में ए। तो परमेबिलिटी क्या हुई, एक्चुअल वेलोसिटी तो क्या हुई, v अपॉन में एन ई, एन यहाँ पे v क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, और डिस्चार्ज वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है तो ये क्या होती है, डिस्चार्ज अपॉन में एरिया सिंपली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि परमेबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, कि सॉइल किस तरह की, यानी क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, ग्रेवल है। दूसरा पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल की साइज ग्रेटर है तो परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। वॉइड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वॉइड्स उसके अंतर्गत कितने होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन ने लिख के प्रोपोर्शनल टू सी, सी इज द कंपोजिट शेप फैक्टर हो गया। डी, D10 भी लिख सकते हैं, डी यानी कि D10 यानी कि इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट हो गया यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉइल
परमेबिलिटी होगी। लेकिन विस्कोसिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हियर म्यू इज द विस्कोसिटी एंड ई क्यू इज द वॉइड रेशियो. तो दीज आर द फैक्टर in which coefficient of permeability depends. For different soil, we write here the value of permeability coefficient. For gravel, that is 1. That means 10 to power 0, that means also 1. कोर्स सैंड के लिए जो वैल्यू होती है 10 to 10 की पावर -1, मीडियम सैंड के लिए 10 की पावर -1 to 10 की पावर -2. इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है परमेबिलिटी की. फाइन सैंड के लिए 10 की पावर -2 to 10 की पावर -3. सिल्टी सैंड के लिए 10 power -3 to 10 power -4. एंड फॉर सिल्टी सैंड दैट इज 10 power -5. और क्ले के लिए कितनी होती है, 10 power -7 to 10 power -9. इसकी वैल्यू वेरी करती है. ठीक है. तो ग्रेन साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इसके लिए हाइजन ने एक फॉर्मूला दिया था, एरिन हाइजन ने, दैट इज K इक्वल्स टू D10 का स्क्वायर. तो K यदि अपन को सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर C की वैल्यू अपन 100 पुट कर देंगे, और D10 क्या होगा, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल in centimeters. Okay. Now the effect of cation on permeability. In case of lower valency cation, permeability will be low as compared to higher valency cation. The thickness of double diffuse layer is high, so voids are less, hence low permeability. देखो जितने ज्यादा अपने क्या होंगे, लोअर वैलेंसी कैटाइन होंगे, तो उसके अंदर क्या होती है, डबल डिफ्यूज लेयर की जो थिकनेस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. अब जब डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया, वॉइड्स कम होंगे, और वॉइड्स कम होंगे तो परमेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी. फिर अपन बात करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी. तो परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के मेथड कौन कौन से हैं, उनको अपन अभी डिस्कस करते हैं. तो देखो कुछ लेबोरेटरी मेथड है, मेनली अपन लेबोरेटरी मेथड की अपन बात करते हैं. लेबोरेटरी के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है, और एक होता है अपना वेरिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. तो देखो कांस्टेंट हेड का मतलब अपन क्या है कि अपन के अंदर जो ऊपर जो वाटर का ये टैंक है, इसके अंदर अपन को क्या है, हेड को कांस्टेंट रखना है. और कांस्टेंट क्यों रखना है, क्योंकि ये जिस सॉइल के लिए सुटेबल होता है वो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल. और कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी क्या होती है, वैसे ही ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है इसमें पानी का फ्लो अपन को ज्यादा मेंटेन करके रखना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, हेड को कांस्टेंट रखते हैं. तो यार देखो ये क्या है, यहाँ एच हो गया, एच क्या हो गया, टोटल हेड हो गया, हेड कोजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सॉइल का सैंपल है, सॉइल के सैंपल की जो लेंथ है वो एल है, और एरिया हो गया ए. तो देयर फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, बाई डेल एच अपॉन एल, यानी कि कितना हेड है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है, तो हेड कॉजिंग फ्लो एंड लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडिया. तो हेड तो क्या हो गया, कैपिटल एच, और लेंथ हो गई ये. तो डार्सी लॉ अप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, के आई ए. तो आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एच बाई एल, दैट मीन डिस्चार्ज इक्वल्स टू के एच के आई ए. और यहाँ से सीधा सीधा अपन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू एल अपॉन एच ए. ठीक है. तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड हो गया, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड. ये जो मेथड जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर सैंड और ग्रेवल के लिए होता है. दिस मेथड नॉट यूजफुल फाइन ग्रेन सॉइल बिकॉज इट डिफिकल्ट टू मेजर द डिस्चार्ज वॉल्यूम, क्योंकि उसके अंदर अपन डिस्चार्ज वॉल्यूम को मेजर करने के लिए अपने पास एग्जैक्ट इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए. फिर फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो अपन यूज करते हैं वेरिंग हेड पैरामीटर. इसके अंदर एक ट्यूब होता है, ठीक है, एक टाइट ट्यूब होता है, फिर पाइप होता है, जिसका एरिया क्या होता है, स्मॉल ए हो गया. ठीक है, सॉइल सैंपल का एरिया ए हो गया. अब इसके अंदर जो हेड कॉजिंग हो गया, ठीक है, हेड कॉज क्या कर रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक का हेड तो क्या है, H1 है, और ये फर्स्ट कंडीशन का बनवाना. फिर जैसे जैसे अपन इसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, उसको अलग ही मेजरिंग में इसमें अपन मेजर कर लेंगे. तो सेकंड कंडीशन के ऊपर हेड जो आ गया वो कहाँ गया, H2 पे आ गया. ठीक है. तो इस केस के अंदर एरिया, यहाँ पर स्मॉल ए तो क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप हो गया. इसके अंदर चेंज कितना होगा, टी टाइम के बाद में जितना हेड के अंदर चेंज हुआ वही वॉल्यूम हो गया इसका. ठीक है. टोटल वाटर कितना चेंज हुआ, तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी. और अकॉर्डिंग टू डार्सी क्या है, क्यू इक्वल्स टू के आई है. तो वाटर हियर, तो क्यू क्या हो गया, v इंटू ए. तो v क्या हो गया, वेलोसिटी, ए हो गया उसका एरिया. तो अब एरिया v की वैल्यू वैल्यू अपने कहाँ लिख दी, वेलोसिटी की क्या हो गई, हेड पर टाइम, दैट इज वेलोसिटी. तो डी एच माइनस डी टी इक्वल्स टू ए. तो डी एच इक्वल्स टू ए, ये किसके बराबर हुआ, के आई ए. तो के आई ए बराबर अपन यहाँ रख दिया, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इसको एच के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इसको टी के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड. ठीक है. तो यहाँ से अपन जो फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला मिलेगा अपन को, के इक्वल्स टू 2.303 एल ए अपॉन 80 log 10 H1 अपॉन H2.
तो ये सारी टर्म अपन को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। एल तो क्या होगा, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, ए इज द स्टैंड पाइप एरिया, ए इज द सॉइल सैंपल एरिया, टी इज द टाइम, and H1 H2 is the level of water in stand pipe, and K is the coefficient of permeability. So here this use of that formula we can calculate the permeability of soil, ठीक है। In variable head permeability, what is the important term in this case? Simple sample use is undisturbed sample, मेनली जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है इसके लिए अपन सैंपल्स को किस को तरह के सैंपल यूज करते हैं, अनडिस्टर्ब, यानी कि जैसी भी एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर सॉइल है तो उस सैंपल को वहां से सीधा पिक किया और यहाँ पे अपन रख देंगे। तो इस केस में अपन क्या यूज करते हैं, अनडिस्टर्ब सैंपल को मेनली यूज किया जाता है। सेकंड है कि वेरिएबल, जब अपन बात करते हैं वेरिएबल हेड परमिटिविटी की, तो वेरिएबल हेड परमिटिविटी इज डन फाइन ग्रेन सॉइल। ये कौन सी सॉइल यूज किया जाता है भाई, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये यूज किया जाता है। और ये टेस्ट किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि जो इसके अंदर डिस्चार्ज है वो बहुत कम होता है, लेस टाइम के अंतर्गत होता है, इसलिए ये इसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो अब इस परमिटिविटी के अकॉर्डिंग, परमिटिविटी और पोरोसिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या है, जो सॉइल है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि इक्विफायर क्या होता है, इक्विक्लूड क्या होता है, इक्विटाइड क्या होता है, इक्विफ्यूज क्या होता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इक्विफायर। तो इक्विफायर इज सॉइल डिपॉजिट विच इन परवियस इन नेचर एंड अलाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि कोई एक सॉइल जो डिपॉजिट हुई है उसको क्या है, परवियस है नेचर की। परवियस मतलब तो क्या हो गया, उसके अंतर्गत क्या है, पोरोसिटी ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर वॉइड्स हैं और वो पानी को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना, एक्विफर होता है। तो यानी जिसके अंतर्गत से अपन वाटर के वॉइड्स होते हैं और पानी को अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्विफर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्फाइंड एक्विफायर एंड सेकंड अनकन्फाइंड एक्विफायर, ठीक है। तो यदि एक्विफायर की मैं बात करूँ तो एक तो क्या होती है, हाई तो पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी का मतलब तो क्या हो गया, उसके अंदर जो नंबर ऑफ अवेलेबल वॉइड्स हैं वो ज्यादा है। अब नंबर ऑफ वॉइड्स अवेलेबल ज्यादा होंगे तो उसके अंदर पानी भी अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। सेकंड, उसकी परमेबिलिटी हाई है। तो परमेबिलिटी और पोरोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। पोरोसिटी का तो मतलब क्या है, उसके अंदर वॉइड्स ज्यादा है। पोरोसिटी का मतलब, तो परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके जो वॉइड्स हैं वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि उसमें से पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ही फर्क में क्या है, याद रखना है, हाई पोरोसिटी होती है और हाई क्या होती है, उसकी परमेबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट जो अपने देखा था वो कन्फाइंड एक्विफर था। कन्फाइंड मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर भी क्या है, एक इम्परवियस लेयर है और नीचे भी क्या है, इम्परवियस लेयर है। तो ये दोनों के बीच में दबा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह देते हैं, कन्फाइंड बोल देते हैं, ठीक है। यदि दो इम्परवियस लेयर के बीच में यदि कोई एक्विफर आ जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, कन्फाइंड एक्विफर बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड आता है अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड मतलब ये है कि जिसके सिर्फ नीचे की तरफ तो क्या है, इम्परवियस लेयर है, बॉटम पार्ट के अंदर तो इम्परवियस लेयर है, but in upper part there is no impervious layer, that means this aquifer is unconfined aquifer। फिर अपन बात करते हैं एक्विक्लूड, ठीक है। व्हाट इज द एक्विक्लूड, a soil deposit that contains water but which is not capable to transmitting adequate amount of water। मतलब कोई जो सॉइल है उसके अंदर क्या है, वॉइड्स तो ज्यादा है, क्या है, वॉइड्स तो है उसके अंतर्गत, बट जो वॉइड्स हैं वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। वॉइड्स क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। और ये किस केस में होता है, ये मेनली क्ले के होता है। क्ले के अंदर क्या नंबर ऑफ वॉइड्स तो ज्यादा होते हैं बट उसके अंतर्गत से अपन पानी को निकाल नहीं सकते आसानी से, ठीक है। तो वो अपना स्टार्टर क्या हो जाता है, एक्विक्लूड हो जाता है। तो इसके अंदर पोरोसिटी तो क्या हो गई, हाई हो गई भाई, जितने ज्यादा वॉइड्स उतनी ज्यादा पोरोसिटी, बट लेकिन इसके जो वॉइड्स हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस सॉइल की परमिटिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्विक्लूड, ठीक है। तो एक्विक्लूड की बात करी तो द सॉइल डिपॉजिट दैट कंटेन्स वाटर बट विच नॉट कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जनरली इज क्ले, दे हैव हाई पोरोसिटी एंड लो परमेबिलिटी। मतलब पोरस तो है, ठीक है, बट इम्परवियस लेयर है, इसमें से पानी को अपन निकाल नहीं सकते। दोनों तरफ इम्परवियस लेयर और परवियस लेयर्स के बीच में फंस जाती है। फिर अपन बात करते हैं एक्विफ्यूज। एक्विफ्यूज का मतलब क्या है, इट इज ए रॉकी मास विच नाइदर स्टोर और नॉट ट्रांसमिट द वाटर। ना तो इसके अंदर वॉइड्स होते हैं, ये पानी को स्टोर कर सकता है, और ना ही इसमें से अपन वाटर को निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो गई, नॉन पोरस और नॉन परमेबल। ना तो पानी इसके अंदर है, और जैसे कि रॉक इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर वॉइड्स भी नहीं होते हैं, उसको अपन पानी को निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि परमिनिटी को, यदि स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट हो, और तो यदि अपन बात करें कि कोई दो पर्टिकुलर सॉइल है, जैसे कि ये एक सॉइल थी जिसका परमिनिटी K1 हो गया, दूसरी K2 हो गई, तीसरी हो गई,
ठीक है, इनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है। यदि मैं इसके अंतर्गत वर्टिकल इक्विवेलेंट को परमिबिलिटी की बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन में H1 प्लस K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसकी परमिबिलिटी होगी। वर्टिकल डायरेक्शन की परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। अब यही मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देखूँ, इस तरफ देखूँ, यानी के एच की वैल्यू में इस डायरेक्शन के अंदर देखूँ तो परमिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 अपॉन में H1 प्लस H2 H3। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकाल सकते हैं बोथ डायरेक्शंस के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट 3 लेयर ऑफ थिकनेस 4 meter, 1 meter and 2 meter and corresponding permeability are 2 meter per second, 1 meter second, 4 meter second respectively. Find out the ratio of average permeability perpendicular to the bedding plane and parallel to the bedding plane. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अपन ने जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या लगाना है, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 एंड H1 H2 H3। एंड वही वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या लगाएंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन में H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3। तो अपन सीधी से वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट 3 लेयर ईच यूनिफॉर्म इन साइड एंड परमिबिलिटी ऑफ दैट लेयर इज 8 into 10⁻⁴, 15 10⁻⁴, and either thickness are and their thickness is 6 meter 3 meter. Find out the effective average permeability deposit in horizontal and vertical direction। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये तो चैप्टर हो गया परमेबिलिटी का। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सीपेज। ठीक है, तो सीपेज क्या होता है, तो कोई भी सीपेज की बात करें तो सीपेज क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी। देखो परमेबिलिटी अपन ने बात करी थी 1 डायमेंशनल हो गई थी, और सीपेज क्या होगा, 2 डायमेंशनल कंडीशंस हो गई, 2D कंडीशंस हो गई। इसके अंदर अपन क्या एजम्पशन मान के चलते हैं हमेशा सीपेज के अंदर, एक तो फर्स्ट तो ये है एजम्पशन कि सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड और डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल इन बोथ डायरेक्शन। जब अपन एक्स डायरेक्शन की बात करें या अपन बाई डायरेक्शन की बात करें, यानी कि जैसे मान लीजिए अपन इस डायरेक्शन के एक्स मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, तो दोनों डायरेक्शन के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, डार्सी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने 2 अजम्पशन हो गए। तीसरा अजम्पशन ये होगा अपना सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, दैट होमोजीनियस सॉइल का मतलब ये होगा कि इसकी जो सॉइल है उसके सारा हर एक पॉइंट के ऊपर जो कंपोजिशन है वो सेम है। ठीक है, और आइसोट्रोपिक मतलब क्या होगा, एवरी डायरेक्शन के अंतर्गत उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम है। तो अब जैसे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, के एक्स और के जेड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम होगी। तो आइसोट्रोपिक तो सारी डायरेक्शन के अंदर वैल्यूज क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए, सॉइल भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए बी एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, के एक्स इक्वल्स टू आई एक्स। ये तो कि डार्सी लॉ ही है, बी प्रोपोर्शनल टू आई, तो के क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी हो गया दोनों डायरेक्शन के अंतर्गत। तो ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत और जेड डायरेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो जम्पशन है, द सॉइल ग्रेन एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन इज रीच। ये सॉइल की जो ग्रेन है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, और जो फ्लो है वो क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंतर्गत पहुंच चुका है। नेक्स्ट अपन मान के चलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होती है 2D फ्लो के लिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी वी, डी वी ओवर डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू 0। तो 3D की होगी और 2D के लिए क्या हो जाएगा, अपन एक डायमेंशन को इसके अंदर से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स और वी जेड की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज के एक्स और आई एक्स प्लस के जेड और आई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से पहले अपन आई एक्स की वैल्यू रख देंगे। आई एक्स क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल एच अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और ये अपन ने एज्यूम कर लिया था कि सॉइल क्या है, आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस है, तो के एक्स इक्वल टू के जेड। तो दिस इज द लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो कोई सीपीएच कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं। तो लैप्लास इक्वेशन डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी अपन बात करेंगे 2D डायरेक्शन के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत लैप्लास इक्वेशन भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन के 2 सेट ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व एज फ्लो लाइन और अदर सेट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो जो लैप्लास इक्वेशन का अपन जब सॉल्व करते हैं तो इससे अपन को क्या मिलेंगे, 2 ऑर्थोगोनल कर्व मिलेंगे, जो एक तो क्या होगा जिसके अंदर फ्लो लाइन होगा और दूसरा क्या होगा उसके अंदर इक्विपोटेंशियल लाइन होगा। इन दोनों की हेल्प से अपन क्या बनाते हैं, फ्लो नेट बना के चलते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन को सीपेज को रोकना होता है, सीपेज को यदि अपन को रोकना है तो अपन क्या करते हैं, मेनली सीट पाइल्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई, सीट पाइल्स को यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो फ्लो का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
फ्लो का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है, और आई क्या होता है, एच अपॉन एल। तो हेड अपॉन में लेंथ, तो अपन क्या कर देते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, फ्लो लाइन की लेंथ को अपन एरिया इंक्रीज कर देंगे। तो सॉइल स्टार्टर के अंदर से कहीं हद तक सीपेज को अपन रोका जा सकता है। तो मेनली सीट पाइल्स को अपन यूज करते हैं किसको रोकने के लिए, सीपेज को रोकने के लिए। तो अभी अपन एक फ्लो नेट को अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो लाइन है इसकी, ये तो क्या होगी, इसकी फ्लो लाइन होगी, जिसके अकॉर्डिंग तो वाटर क्या करेगा, मेरा सीप करेगा, ठीक है। और ये हो गया उसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस, यानी कि इन लाइन के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इसकी बात करते हैं तो मेनली अपन मान के चलते हैं कि एक दूसरे को क्या है, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन है वो ऑर्थोगोनली कट करती हैं। कैसे करती हैं भाई, ऑर्थोगोनली कट करती हैं, 90 डिग्री पे अपन को कट करती हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर किसी एक फ्लो चैनल के अकॉर्डिंग अपन को एक डिस्चार्ज निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्चार्ज निकालना हो, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। इसके अंदर अपन मान के चलते हैं कि ये जो कट कर रहे हैं और ये हमेशा क्या है, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एलिमेंट्री प्रोफाइल को अपन क्या मानते हैं, स्क्वायर मान के चलते हैं, यानी अल्फा और बीटा का रेशियो क्या होगा, 1। अल्फा क्या हो गया, दो फ्लो लाइन के बीच की डिस्टेंस, और बीटा क्या होगा, दो एक्सपोनेंशियल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर फ्लो चैनल निकाल सकते हैं। तो नंबर फ्लो चैनल्स क्या होंगे, जितनी फ्लो लाइन है उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। और वहीं अपन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, कितने ड्रॉप इसके अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे भाई, डेल एच अपॉन बीटा, भाई कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है पर्टिकुलर लेंथ के, तो यहाँ पर लेंथ बीटा है तो क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन बीटा, ठीक है। तो पर्टिकुलर फ्लो चैनल के अंदर डिस्चार्ज कितना होगा, के आई ए, और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट लेंथ की मैं बात करूँ, और अल्फा इसके क्या हो गया, बेड्स हो गया, तो अल्फा इंटू ए। तो यहाँ से मैं डेल एच की वैल्यू तो निकाला मैंने, क्या एच अपॉन में एन डी, एच अपॉन में एन डी, बिकॉज ए इक्वल टू अल्फा ए। तो यहाँ से जो क्यू की जो वैल्यू है, के इंटू एच अपॉन एन डी बीटा अल्फा इंटू ए, और इसको अपन मैं रिप्लेस कर सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ए को अपन क्या लिख दिया, एन डी अपॉन बीटा, और अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। तो फिर अपन इसको और सिंप्लीफाइड टर्म में ले आए, तो ये क्या हो गया, क्यू इक्वल टू के अपॉन एच अपॉन एन डी, द डिस्चार्ज फॉर वन चैनल। अब ये तो क्या आ गया, किसी एक पर्टिकुलर चैनल से डिस्चार्ज आ गया। तो अपन को यदि टोटल डिस्चार्ज निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम द एनी फ्लो नेट। विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट अपन ये डिस्चार्ज निकालना हो तो अपन इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्चार्ज, दैट इज परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल head into nf upon nd. Nf is the number of flow channel, that is number of flow line -1, and what is the nd, nd is the number of equipotential drop -1, ठीक है। तो nd की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1 कर देंगे तो वो आ जाएगा। और एन एफ और एन डी को अपन क्या बोल देते हैं, कई बार सेफ फैक्टर की टर्म से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं अपन बात करते हैं एग्जिट ग्रेडियंट की। तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, हेड के अंदर जितना चेंज हुआ है और किस विड्थ के अकॉर्डिंग हुआ है, किस लेंथ के पर्टिकुलर हुआ है, तो वो अपना क्या कहलाता है, एग्जिट ग्रेडियंट कहलाता है। एग्जिट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एग्जिट ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट, ठीक है। तो दिस इज द सॉइल स्टार्टर एंड दैट इज द फ्लो लाइंस, दैट इज द, ये क्या होगी, इसकी फ्लो लाइन हो जाएगी, और ये क्या होगी, इसकी इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। तो द एग्जिट ग्रेडियंट मस्ट नेवर कम क्लोज टू द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू है वो हमेशा क्रिटिकल ग्रेडियंट के इक्वल में नहीं, क्लोजर नहीं होनी चाहिए। तो जब भी अपन एग्जिट ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट माइन अपॉन में एग्जिट ग्रेडियंट, और इसके लिए अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू लेते हैं वो एटलीस्ट 6 लेते हैं। ये अपन को रिकमेंड किया जाता है अगेंस्ट पाइपिंग को रोकने में। पाइपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द पाइपिंग, जब अपन बात कर रहे हैं कि फ्लो नेट विल नॉट चेंज इफ परमिटिविटी of soil change if head loss is flow is different and direction of flow change, that flow net change only when flow space is same, ठीक है। what is the property of flow net, ये अपन ने अभी पढ़ लिया, ठीक है। द फ्लो लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन और तो ईच अदर होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है फ्लो नेट की, कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और फ्लो लाइन है वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कट करती है, ठीक है। और ये कब वैलिड होगा, जब सॉइल अपनी क्या होगी, होमोजीनियस एंड आइसोटोपिक, क्योंकि अपन ये पहली एग्जांपल लेके चल चुके हैं। फ्लिप फ्लो फील्ड आगा, उसके अंदर फ्लो फील्ड जो होगा उसके अपन एलिमेंट को क्या मान के चलेंगे, एल मतलब स्क्वायर मान के चलेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 1। और हेड लॉस जो मानेंगे अपन वो सक्सेस एक्सपोनेंशियल लाइन को वो हमेशा क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। डिस्चार्ज थ्रू ईच नोड इज सेम एंड सेफ फैक्टर इज फंक्शन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस।
तो अब इस फ्लो नेट का क्या क्या यूज अपन कर सकते हैं, तो टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीपेज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकाल सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लो नेट, तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा और एक कोई अदर दे देगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सीपेज, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड अपलिफ्ट प्रेशर एंड कैलकुलेट हियर। अब यदि अपन से बात करें कि अपन को अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो अपलिफ्ट प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपस्ट्रीम साइड के अंदर क्या करते हैं, सीट पाइल प्रोवाइड कर देते हैं। अपलिफ्टिंग प्रेशर अलोंग द डैम कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग द वर्टिकल सीट पाइल और कट ऑफ पाइल at the upstream end of the dam, that is h equals to h1 minus h2 head causing flow। जिससे क्या होगा, h1 h2 वही अगेन अपन बात करें लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे वाटर कम्स अप द बेस ऑफ डैम, मच ऑफ द हेड इज ऑलरेडी लॉस्ट एंड प्रेशर हेड रिमेन्स वुड बी लेस। क्योंकि जब भी अपन को पाथ ज्यादा लंबा करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, इसका हेड उसी में खत्म हो जाएगा फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है भाई, वर्टिकल सीट पाइल अपन प्रोवाइड कर देंगे अपस्ट्रीम के अंतर्गत। वहीं अपन को यदि पाइपिंग रोकनी है ये, तो प्रोविजन ऑफ डाउनस्ट्रीम कट ऑफ सीट पाइल विल कॉज मेजर लॉस इन डाउनस्ट्रीम साइड, हेंस द below the dam uplift force becomes more, hence the uplift pressure and piping we use both upstream downstream seat piles। तो अपन दोनों तरफ ही अपन क्या करेंगे, सीट पाइल्स यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये पाथ और लंबा होता चला जाएगा।